Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I'm going to teach you in this semester and principles of management. The subject is actually related to management abilities and why abilities are required for a mechanical engineer. Because a mechanical engineer, we have to arrange a lot of things in the industries, in the organizations, and where we have to work as a manager, as a senior manager, and departmental head, as an engineer. So, in which responsibilities, we have to manage several things, including production, including supply chain, including labor. So, these all things are needs the management abilities, and these management abilities will do the performance, will affect the performance, will affect the productivity, and will affect the total production and relations between the labor, staff, and management. So these abilities are really most important for a mechanical engineer. That's why we have to understand all these things in this semester. So first of all, I would like to discuss about the subject syllabus. It has the code 5ME4-05 and the name of the subject is Principles of Management. It has total 2 credits for this semester, maximum marks 100, in which 20 marks internal and 80 marks are external component. And it will have a 2 hours of end term exam. For that, you have to prepare well so that you can get maximum marks in this subject. The subject will be very easy for you if you have a good sense of humor, good mental ability, if you can take decisions properly, your mind has the positivity, then you will don't have any problem in this subject and overall in taking decisions. Actually, this management is the thing that everyone have that ability to manage things, but that depends on the way of thinking. If you have a positive way of thinking, you will take all the decisions right. But if your mental ability is negative, your decision may be wrong or your organization will have to face some losses. So before starting the subject, I would like to discuss about the syllabus. This subject has a 6 segment, including first segment as introduction. In the first introduction, we will study about the objective, scope, and outcome of the course. That what is the objective, and the objective, as I earlier discussed, that you have to able to manage things according to management, according to our organization. So you will be able to understand the things, how to manage and why this management is necessary for an organization. Second thing is scope. What is the scope of this subject? That means principles of management. Scope is the management. That means you have to understand about the planning, staffing, organizing. These are the common factors that will be used in the management. So you have to understand about these all the topics. And outcome of the course, that means after that, when you will complete your course, what will you learn from this course? So you will be able to understand about the management studies and management decisions and about the previous management thinkers, many organizations which are very higher in the management and they are really successful in their work. So you have to understand why they are so successful, what are their management strategies, how the management organization structure they use. So that will be very useful for you to understand this subject. Second segment has the basic concept of management, in which it has the definition, need and scope, different school of management thought. That means it has a 4 different management thought schools. That means behavioral, scientific, system, and contingency. So we will study about these different schools and what the main thoughts of these schools are, why we are using them, what we will study in them. So that will be the important point. After that, we will study about the contribution of management thinkers. There are various management thinkers who gave their ideas about the management.
but few of them were best. And we will study about them. These are Kautilya, Taylor, Fayol, Peter Drucker, and C.K. Prahlad. And Kautilya was the first management thinker, and he was also from the India. So it will be very useful for us to understand about the management thinkings of Kautilya. Third segment will have functions of management. In first, we will study about the definitions, and then second, in will we will study about the functions of management. So in this, we will study about the two functions, planning and organizing. What is the important role of planning in the management? We will study in this segment. And after that, how we can organize an entrepreneurship or re-engineering or organizational structure. We have to discuss or we have to learn about these things in this segment. Fourth segment will include the staffing. That staffing has an important role for an organization. How to manage the staff in the organization, how to recruit them, how to convince them to continue work in our industry, how to motivate them, and what is the strategies that can be useful in between a manager and their staff. So these are the very important topics in this segment, and we have to learn about them. Next segment, segment number 5, in which we will discuss about the leading and controlling. Leading and controlling are these two different factors. If we are leading, then we have to lead all the things about our production, about our organization, about our staff. And we have to develop the leadership qualities in us so that we can control everything easily. And in the next topic, controlling. The controlling depends on everything that we have to going to organize. If we are doing a process and we have to control the process, that you have to complete that process in given particular time duration. Also, we have to control the techniques, which techniques we are going to use and which technique is useful for our production and our industry. Next is productivity. That means you have to complete the product in the given time frame, and our productivity should be high. And operations management and total quality management, these are the key factors that will be used for our controlling system. How we will manage the operations, how we will manage the total quality of the process, that will be very important points and very important factors in the form of management. Next segment, we will discuss about the management practice of various industrialists or various successful persons in the industries, like Dhirubhai Ambani from India, Narayan Murthy from India, Premji, Ratan Tata, and Steve Jobs and Bill Gates. And I hope you have known or you have listened some their names already, and you are very well aware about these persons. So that will be not difficult to recognize them who they are. So in this segment, we will discuss about their management policies, which management thinking they have, and we will discuss about them so that we can learn easily that everyone in the world has the positive management thinking can achieve his success. So for motivation, these management thinkers will be these management thinker and industrialists will be very useful for us to learn about the management. After that, we have to study about the organizational structure of any 10 companies. So we will have some case studies of any industries. We can choose any one of them. So we have to find out some 10 industries, and then we will classify them into different type of organization, which we are studied in the previous segment according to organizational structure. That we can classify them and justify why they use that structure for their organization and how that structure was useful for their industries. Then we will study about the leadership profiles of any 5 business leaders and studying their leadership qualities. So in this segment, we will also consider about some leadership qualities and business leaders. So we can select any 5 business leaders
Then we will study about their leadership qualities and we will discuss about them so that we can learn from their ideology or their strategies. So this is the subject syllabus of your subject principle of management. So as you see, the subject is very simple and very useful for your daily life. If you are doing work in any organization, it will be useful for you. You may be in a government organization, you may be in a private organization, but in every organization, these qualities will help you to complete your work in given time frame, to prepare yourself for all the problems you are going to face. You have to develop the abilities to leadership, and you have to make yourself as good in the management as you can. So I hope you will take interest in this subject and will learn very carefully. Now it's time to start the subject. So I would like to start with the introduction. So what is the management? So if we will define according the definition, management has been defined by several theorists in their own way. Henry Fayol defined management as management is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control activities of others. That means मैनेजमेंट एक वो चीज है जो कि आने वाले टाइम को फोरकास्ट करता है. दैट मीन्स आपको क्या डिसीजन लेने हैं जिनकी वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है. टू प्लान, हमें जो काम करना है उसके लिए अपने को कौन सा प्लान बनाना चाहिए जिसकी वजह से हम वो अचीव कर सकते हैं. टू ऑर्गेनाइज, जो प्लान हम बना रहे हैं उसको किस तरह से अपने को ऑर्गेनाइज करना है कि जिससे अपना प्लान है वो सक्सेसफुल हो. दैट मीन्स कौन सी चीज आपकी पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज आपकी बाद में आनी चाहिए, कौन सा आप प्रोसेस पहले सिलेक्ट करते हैं, कौन सा प्रोसेस आपका बाद में रहेगा. उसके बाद टू कमांड, अब जब आपने प्लान बनाया है उसको ऑर्गेनाइज भी किया बट उसको कमांड करना भी बहुत जरूरी है कि आपका प्रोसेस है वो पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम चलता रहे. तो उसके ऊपर आपका हर एक चीज के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, आपका ध्यान रहना चाहिए आपको कि कैसे आपका प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली रनिंग में है या नहीं है. टू कोऑर्डिनेट, जब आपका प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रॉपर है, बेटर रहेगा तो आपको कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो दैट मीन्स आपके जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनमें सब में आपका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए. एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, उसके अलावा आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं उनके सारी एक्टिविटीज के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए कि जैसे आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको मटेरियल कहाँ पे सप्लाई करना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज हैं वो भी आपकी सारी की सारी मैनेज होनी चाहिए. तो अगर इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो वही चीज आपकी मैनेजमेंट कहलाती है. इन सिंपल टर्म्स, मैनेजमेंट इज ए मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड delegating the work that needs to be done among people who can do it, and then ensuring that said work is done diligently and timely. दैट मीन्स आपका जो भी काम है, जो दिया गया काम है आपको, वो टाइमली आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके कंप्लीटली प्रॉपरली काम को कंप्लीट कर ले. तो दैट इन सिंपल एग्जांपल, being the class representative, there are so many things a class representative have to manage. An efficient class representative is the one who knows how to delegate his duties and take commands of the situation. दैट मीन्स अगर आपको खुद को अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है. आपकी ड्यूटी है तो उस ड्यूटी के अंदर आपको हर एक चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को कि आपकी क्लास है वो मैनेज रहे, उसमें नॉइज ना हो, उसमें डिस्टरबेंस ना हो, उसके अंदर डिसिप्लिन कंटिन्यूसली मैनेज रहे. तो ये आपकी एक एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपकी ड्यूटीज होती हैं. स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको रिप्रेजेंट करना है अपने हेड के सामने, तो उन सब चीजों के साथ आप अपने स्टूडेंट्स को भी साथ में लेके चलते हैं, प्लस आपके स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन आप करके रखते हैं. तो दैट मीन्स आप एक रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको उनको सबको साथ में भी लेके चलना है और उनको सबको साथ में लेके आपकी जो ड्यूटी है उनको आपको कंप्लीट भी करना है. So that means you have double responsibilities and you have to fulfill them. So if you can do them very well, you are perfect in management, and if you can't do them, there is some problem in your management policies.
Next topic is need for organization management. What is the need of organization management? Organization management gives a sense of security and oneness to the employees. That means आपका एक ऐसी सिक्योरिटी फील होती है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से कि हाँ कोई है हमारे लिए जो सोचता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। और सारे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन सबको एक यूनिटी लगती है कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो दैट मीन अगर आपका मैनेजमेंट होगा तभी आपको ये फील होगा कि हाँ हम कहीं एक साथ काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा, सब इंडिविजुअल अपने लिए काम करेंगे। तो दैट मीन्स वही एक डिफरेंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने में और एक इंडिविजुअल एज ए वर्कर आपको काम करने में। सेकेंड, an effective management is required for better coordination among various department. अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट मीन्स आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन वहां पे मिल सकता है आपको। आपका मैनेजमेंट जितना इफेक्टिव होगा उतना इफेक्टिवली आपके सारे डिपार्टमेंट हैं वो वर्क करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज accomplish task within the stipulated time frame as a result of effective organization management. अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है अपने वर्कर के साथ, अपने स्टाफ के साथ, तो आपको जितने भी टास्क दिए गए हैं उनको आप एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको वहां पे बहुत सारी ट्रबल्स होंगी और उनकी वजह से आपको अपना काम करने में टाइम भी लग सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज स्टे लॉयल टुवर्ड्स देयर जॉब एंड डू नॉट ट्रीट वर्क एज ए बर्डन। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हमेशा अपने वर्कर्स को अपने मैनेजमेंट के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल बनाता है। मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा आपके एम्प्लॉयज हैं वो उतने ज्यादा लॉयल रहेंगे, बिकॉज दे ऑल विल बी हैप्पी। और कोई भी काम है उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हमारा काम हमारे लिए एक बर्डन है, हमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है, बिकॉज उनकी सारी एबिलिटीज को ध्यान में रख के उनको काम दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कंप्लीट करेंगे टाइमली। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लीड्स टू ए पीसफुल एंड पॉजिटिव एम्बियंस एट द वर्क प्लेस। तो जितना आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना वहां पे आपका एनवायरमेंट है वो शांतिपूर्वक और हल्का फुल्का पॉजिटिव सेंस में एक कूल एनवायरनमेंट रहेगा आपके वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ पे सारे लोग खुश रहेंगे और उनमें एक खुशी का माहौल रहेगा और वो सारे काम है वो पॉजिटिवली और बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। तो ये सारे इफेक्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, गुड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की पहचान होती है। नेक्स्ट, स्कोप और ब्रांचेज ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी अपनी ब्रांचेज हो सकती हैं या कहाँ कहाँ स्कोप है मैनेजमेंट का, जहाँ की मैनेजमेंट की अपने को रिक्वायरमेंट है, तो वो चीजें हैं उनके अंदर अपनी सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्रिपेयर एन इफेक्टिव बिजनेस प्लान। इट इज इसेंशियल टू डिसाइड ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अवॉइड कंफ्यूजन लेटर ऑन। तो दैट मीन्स अपन एक जो भी प्लान करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस प्लान होगा आपका, आप फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं उसको डिसाइड करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हैं वो आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आपका कोई फ्यूचर प्लान बनाना है तो वो आपकी क्या कहलाती है? प्लानिंग। द फ्यूचर एक्शन टू अवॉइड कंफ्यूजन लेटर ऑन। दैट मीन्स अगर आपको जो भी काम करना है उसमें आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या कंफ्यूजन आ सकते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम पहले से ही फाइंड आउट कर लेते हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो आपका फर्स्ट स्कोप प्लानिंग। सेकंड पॉइंट है इसी में प्लान आउट हाउ यू इंटेंड टू डू थिंग्स। आपको ये भी प्लानिंग करनी है कि आप कैसे इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही चीज आपकी प्लानिंग है कि क्या आपको करना है और कैसे उनको कंप्लीट किया जा सकता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द जुडिशियस यूजेज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द बेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉयज। दैट मीन्स आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज को आप कितना यूज कर सकते हो, कैसे उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि आपको उनमें से बेस्ट मिल सकता है। दैट मीन्स अगर आपके पास एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो कौन से एम्प्लॉय को आप कौन सा ऐसा काम दें जिसके ऊपर वो अपना बेस्ट दे सकता है। अगर सपोज आपका मैनेजमेंट अच्छा है और एक स्किल्ड आपके पास लेबर है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली आपको उसी स्किल का उसको काम देंगे। जैसे एक सीएनसी ऑपरेटर है और उसकी सीएनसी ऑपरेटिंग बहुत अच्छी है
तो आप उसको सीएनसी के ऊपर ही प्रोडक्शन का काम देंगे ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। बट अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो वो उस वर्कर को सीएनसी के बजाय किसी भी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग जैसे लेथ मशीन या शेपर मशीन के ऊपर भी काम करवा सकता है, और वहां उसको बेटर नॉलेज नहीं है उसका और उसकी परफेक्शन है वो सीएनसी पे है, तो वो वहां अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं दे सकता। और जिस वर्कर को सीएनसी के बारे में नहीं पता, उसको अगर सीएनसी पे वर्क कम करने के लिए दिया गया तो वो सीएनसी पे अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो दैट मीन्स वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द एम्प्लॉयज कि कौन से एम्प्लॉय को कहाँ अपने को यूज करना है और किस तरह से उनको अपने को बेस्ट लगाना है। प्रिपेयर ए मंथली बजट फॉर स्मूथ कैश फ्लो। अपने को ऑब्वियस सी बात है एक बजट है वो लेके चलना होता है कि जैसे अपना जितना भी कैश फ्लो हो रहा है वो स्मूथली चलता रहे। कितना अपने पास इनपुट है, कितना अपने पास एक्सपेंसेस हैं अपने, कि उन सबको अपने को अचीव करना है। तो सारी चीजें अगर अपन प्रॉपरली कर लेते हैं तो वो अपने ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज हैं वो काफी इंप्रूव रहती है। थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग। पुअर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लीड्स टू अनहैप्पी एम्प्लॉयज who eventually create problems for themselves as well as the organization. तो दैट मीन्स अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है वो पुअर है तो आपका स्टाफ कभी खुश नहीं रह सकता, और जब आपका स्टाफ खुश नहीं है तो वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और वो प्रॉब्लम उसके लिए खुद के लिए भी हो सकती है और मैनेजमेंट के लिए